अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ट्रस्ट मी, आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ इस एपिसोड पे फीचर करने के लिए. लाइक if I had been 5 minutes late, it would have been Mustafeez and Zoha being the soul to the dynamic duo making this episode. लेकिन खैर, the thing is, कल पाकिस्तान का पहला मैच हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ एंड टू सम इट अप, शुरू में शाहीन ने एक अच्छी विकेट ली, लेकिन उसके बाद शे होप ने मास्टर क्लास करते हुए एक सेंचुरी स्कोर की. एंड व्हेन वी थॉट कि हम मैच से निकल गए, एंड somehow शादाब खान वाज एट थर्ड मैन और उसने एक ब्लाइंडर पकड़ा. आई एम प्रीटी श्योर मैंने इसके अलावा इससे कोई बेहतर कैच नहीं पकड़ते हुए देखा. उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का ऑनस्लॉट शुरू हुआ. पूरा ने छक्के मारे, लेकिन उसके बाद इवन दो at the death we did concede quite a lot of runs. Haris Rauf also went for runs. Hassan Ali went for runs. Haris Rauf did end up with 4 wickets and Pakistan had 302 runs to chase. इसके जवाब में Pakistan did not get off on a flyer and Fakhar Zaman lost his wicket slightly cheaply. Then Babar and Imam, continuing with their form from the Australian ODI series, they showcased why they're first and third respectively, and somehow Pakistan got closer to the edge, to the line. उसके बाद आया Rizwan, and even though Rizwan was struggling initially, he somehow found his groove and he scored 60 runs as well. उसके बाद फिर हमारा थोड़ा बैटिंग कोलैप्स हुआ, जिसपे हमें लगा कि वाकई पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं. But somehow Khush-Dil managed to turn things around, and in the end Nawaz scored the winning runs with a massive 6. So beginning with that episode, I think there are quite a lot of things जिसके पे बात करनी चाहिए. तो अगर आप मैच देख रहे थे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, शाहीन was bowling around 135 or 137. That was his average. Whereas if you remember Shaheen Shah Afridi from the World Cup, you would know कि 145, 147, 148, 150 तक आराम से reach कर सकता है. And that was pointed out by the commentators who said कि Shaheen is compromising on his speed in a bit to make sure कि उसका career long रहता है. And उसके बाद फिर stats बताए गए. Mustafiz, would you like to continue on this? Because we had a discussion on this as well. Yeah, the idea was कि मुझे भी सिवाय एक आध जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज के ओडीआई के अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर शाहीन किसी गेम में रेस्ट हुआ. मुश्किल से कोई एक आध ज़्यादा गेम हो गया इंटरनेशनली, बट नॉट जस्ट दैट. एग्जैक्टली, नॉट जस्ट दैट. पीएसएल पिछली तीन पीएसएल में मुझे एक भी गेम नहीं याद जिसमें शाहीन ना खेला. उसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्ट पॉइंट आउट किया जो मुझे खुद नहीं पता था. वो ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट को अगर सिर्फ काउंट करें तो सारे फॉर्मेट्स में अक्रॉस द ग्लोब सबसे ज्यादा ओवर्स किसने कराए? शाहीन शाह अफरीदी ने. और उन्होंने इवन मोर देन स्पिनर्स. और अगर आप हर टीम में देखें, नेथन लाइन हर ओवर करा रहा होता है एक तरफ से, वो दूसरी तरफ से बॉलर्स रोटेट होते रहते हैं. हर टीम में ऐसा सिचुएशन होता है, बट शाहीन इज लाइक द गो टू बॉलर फॉर पाकिस्तान. एंड सिंस उसकी फिजिकलिटी भी इतनी अच्छी है, लाइक ही डज नॉट गेट इंजर्ड वेरी ऑफन, तो उसमें ये होता है. सो Zoha and I were in a cricket space last night as well, and they were discussing the same thing. तो उसमें बात आई कि पाकिस्तान misused उमर गुल एंड जुनैद खान, एंड because of the fact that they misused them, उनकी इंजरीज जो हैं उनका करियर जल्दी खत्म कराने लग गए थे. And at this stage, you would have expected someone from like Junaid Khan or maybe Umar Gul to still be here. But the better truth is that they're way past their peaks and they're no longer match fit. So, Zoha, what would you like to say on this? And would you like to elaborate on Hassan Ali's situation as well? I think wahi baat hai, if you look at our long-term scenario, which is the World Cup next year, so hamara pace attack is not even pace attack entirely. Hamara entire bowling attack is Shaheen and then building around him. So you get Haris to like take the other end, especially in the death bowling. And then Hassan Ali, ideally it was Hassan Ali, but uski form nahi hai. But then उस space में ये भी कह रहे थे कि ideally इस वक्त आपके पास कोई एक experienced bowler होना चाहिए था, either आमिर or Junaid. I think even Wahab and chalo Umar Gul are way past their peaks, but either Amir or Junaid, because if you think about it, Amir and Junaid Khan are on the same age as Pat Cummins, I think. मतलब उन्हीं की age के हैं. So if you have someone like that complementing our pace attack with Shaheen, it would have been so much better. But वही बात है कि we do not manage our bowlers well at all. Or even Shaheen ki with this thing is कि
ये हसन जी भाई कह रहे थे स्पेस में, because I think he has so much insight into Pakistan cricket and how the players develop. He was saying कि इनके अंदर इतनी competitiveness होती है कि even a player like Shaheen, he knows कि he needs to play all the games, even though he knows he's the best, like inarguably the best bowler in Pakistan right now. पर उसको उसके अंदर इतना competition है कि उसकी जगह ना चली जाए. और ये डर इतना है हमारे प्लेयर्स में कि जगह नहीं चली जाने वाली चीज है ना, कि देर लाइक वी आर नॉट गोना रेस्ट, प्ले अस एवरी गेम. एंड इफ यू थिंक, हम शाहीन को इतनी देर से देख रहे हैं बिकॉज वी थिंक अबाउट इट, बिकॉज हम सोचते हैं हमने उसको इतना खेलते हुए देख लिया, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, ही डेब्यूड इन 2018 या 2019, तो अभी 2022 है, तो ही हैज, उसका करियर इतना लंबा नहीं है, but and we need him for like way long. If we want to manage him for that, we like don't want to exhaust him. But I don't know यार, अगर आपका best bowler in the world अभी तक comfortable नहीं है अपनी place में, that he thinks that he needs to play to prove that he should be in the playing 11, then that's something that we all need to think about. I was listening to the same point. Can you give me a second first, Mustafeez? Because I had a different view from what they were saying in the space. Isn't it like a personal thing as well? Shaheen ko pata, he's a world beater. He's the number one. He has to compete for the best of the best. Ratings ka मामला है. If you look at Shaheen and you realize कि यार West Indies के खिलाफ match है, there's a very high chance West Indies isn't like one of the top teams anymore. कि मैं आऊँ, विकेट लूँ, मैं अपनी ODI ranking improve करूँ and all. So I think it's not just that कि अपनी position पक्की है या नहीं. I know हसन अली ये बोले तो समझ आती है. Rauf भी बोले considering कि नसीम शाह और हारिस रऊफ are relatively like similar to some extent. Also हसनैन का भी एक्शन ठीक हो गया. Congratulations हसनैन, आपके लिए बहुत दुआएं थी. लेकिन I think personally अब वो वाला भी situation, they realize कि they are at the top of the world and they just need to compete with the top one or two more और world में first आ जाएंगे. तो मेरे ख्याल से वो वाली mentality भी पाकिस्तान टीम में अब आ गई जिसकी वजह से वो रेस्ट नहीं करते. लेकिन खैर मुस्तफीज, would you like to continue? I'm sorry for interrupting you. No, exactly. You did the right thing in point out कर दिया. मेरे ख्याल से I don't think, knowing Shaheen, I don't think he does care a lot about personal records, but what he does care about is just playing cricket. He's one of those guys. रिजवान और शाहीन जो जेन में आते हैं in the पाकिस्तानी side, वो कहते हैं बस हमें खिलाओ, हमने खेलना है मुल्क के लिए, टीम के लिए, डाला था. अब मसला ये है कि ये प्लेयर की प्रेफरेंस रहेगी. ये वो प्लेयर्स हैं जो खुद से रेस्ट नहीं मांगेंगे. They will have to be managed. मिसाल के तौर पे मेरी और सोहा से बात हुई थी when वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले रिजवान का अच्छा खासा बुरा हाल था. He would never even for a moment, apparently उस इंटरव्यू में उसने ये नहीं कहा था कि मैंने कभी भी सोचा हो कि मैंने नहीं खेलना. तो लाइक आप पड़े हुए हो बिस्तर पे, हर किसी को आपके जान का खतरा है एंड यू आर लाइक मैं तो खेल रहा हूँ. तो दीज आर प्लेयर्स जो खुद से कभी नहीं कहेंगे हमने नहीं खेलना. शाहीन का आपको एक और भी याद आएगा, आई थिंक टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लास्ट विकेट 10 ओवर रहते थे बैटिंग के, 10 या 11. Oh, I remember that moment. On the head twice. He was hit on the head twice. I think by Ferguson ने उसे 2 बार मारा था. Proper concussion थी and it नजर आ रहा था वो ऑफ हो गया. And he was not moving out of the field. और फिर commentators कह रहे थे कि the physicians need to step in and take him off. ठीक है, this game is not like this. ये game अगर पाकिस्तान बचा भी जाता है, there's an entire career ahead of him. That career is more important than this game. तो अगर इससे याद है, हाँ, ये पाकिस्तान करता है. अगर तुम्हें याद हो, पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है. न्यूजीलैंड का बहुत बुरा रिकॉर्ड है सर पे मारने का हमारे खिलाफ. तो आसिफ अली के साथ भी यही हुआ था. He got hit on the head and clearly he wasn't all right at that moment. नजर आता वो ठीक नहीं था. But the physio came and everyone was like, नहीं तुम खेल लो. If you remember, उसने शुरू में छक्के मारे, उसके बाद he was properly struggling और एकदम से वो बाद में उसने एक छक्का मार दिया, सारे खुश हो गए. But at that moment he was not in his right zone. हमारी आवाम में भी ना एक चीज होती है भी यार, लाइक देखो कितना बड़ा जिक्र है, बहादुर है ये, ज्यादा आदमी. वो जो ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक लाहौर टेस्ट में जो रिजवान के हाथ, मतलब बेचारे के बॉल लग के उसके हाथ बिल्कुल, और तब आपके पास था भी बैकअप कीपर, इमाम को 2 ग्लव्स, यार थोड़ी देर छोड़ दो. रिजवान मतलब अपने हाथ जो वो करी जा रहे हैं और वापस फिर कीपिंग है. लाइक
ये ना Like, बचपन okay, बचपन की give me a मेंटालिटी होती है, डर के आगे जीत है, चोटें तो लगती हैं, वो निकलती नहीं है। आई थिंक हमने बहुत ज्यादा बात की है इसके ऊपर। सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, आई थिंक बैटिंग के ऊपर बात करें सबसे पहले, क्योंकि it's not every day that your one batsman breaks almost every record out there with just one innings. Be it the fastest player to 1,000 runs as captain, 13 innings, surpassing Virat Kohli, जिसने 17 innings लगाई थी. The list was full of people like KB de Villiers, Ganguly, but Babar King on top. उसके अलावा second person ever in cricketing history to score 3 consecutive centuries. I mean, हम पिछली एपिसोड में ही बात कर रहे थे कितना कूल हो यार, ये कर ले. And suddenly he's out there playing his shots, and you realize when he was on 13, I realized इतना सुकून से खेल रहा है ना आज, ये बंदा आज कर जाएगा. और प्रॉपर जब वो 100 हुई थी ना, ऐसा लगा दिल से खुशी निकली जैसे अपने की हुई. And that was like such a cute moment for me. It's not every day you get to see Pakistani batter actually making records. एक मुझे बचपन में याद है, मोहम्मद यूसुफ ने बनाया था, वो मैं अगले 10 साल तक सारों को सुनाता रहा था. लेकिन I am very happy. I think everyone is super happy, and congratulations to Babar Azam on that. तो since हमने बैटिंग की बात ही शुरू कर दी है, तो my colleagues were slightly concerned कि मोहम्मद हारिस को इसको बैटिंग नहीं दी, उसको भेजा नहीं क्या. So I would ask them to present their opinions first on it, and then I'll talk, because I know my opinions would be slightly different from what they have to say. I think my opinion changed considerably उसके बाद. But Is it I because still, of that one tweet? it is because of that tweet. But I still don't agree with sending in Shadab. But I agree with sending in Khushdil. उस वक्त खुशदिल वाला तो मैं on the spot भी इतना concerned नहीं था. And I agree with sending in Nawaz. With Shadab, I still disagree with sending in Shadab, but I understand why Shadab was sent. लेकिन I still don't think कि 3 innings की base पे शादाब को एक proper batting all-rounder बना के उस situation, because उस वक्त the required run rate wasn't insanely high. उस वक्त it was manageable, and I feel like Haris could have managed it. लेकिन again, I understand why शादाब was sent. लेकिन मुझे है 11 में अगर I understand the debutant angle, मगर 11 में कोई बंदा है and Zoha, if have you he can noticed do that he it, specifically said the last 3 innings? He's still stuck on that tweet reply. yeah, no, I just don't think that was very convincing. Shadab को भेजना. Yeah. चलो Shadab को Zoha, sorry bro, देखिए I'm sorry for cutting you off. I think he didn't complete his प्लीज sentence. मुसीब बात पूरी हो गई थी. नहीं, मैंने यही कहना था. मैं I'm अच्छा not अच्छा convinced with sending Shadab and over अच्छा other अच्छा. bats. We thought we cut you off, so that's why I was like, फिर से बोल लो. यही है कि शादाब को बाकी बैट्समैन like proper batting Batter, say batter from now oh yes, onwards. बैटर से ऊपर भेजना जो जिनका काम टीम में बैटिंग करने और कुछ करना नहीं है. आई थिंक वो जाती है. आई एम शदाब फैन, तो मैं उसके बारे में तो कभी कुछ बुरा नहीं बोलूंगी, चाहे मैं अपनी हर एथिक्स और मोरल और हर चीज के खिलाफ, लॉजिक के खिलाफ जाके आई विल डिफेंड शदाब. बट आई थिंक मेरा जो कंसर्न था मोहम्मद हारिस की बैटिंग पर, वो आई थिंक बहुत सुपरफिशियल था. तो यही था कि लाइक यू नो, इफ इट्स योर डेब्यू गेम और मुल्तान में हो रही है इतनी गर्मी में, यू फील्डेड ऑल डे, यू 21 years old, मतलब you just go in and bat for 2 overs, आपको it's like you know थोड़ा एक्साइटिंग डेब्यू होता, which is I know very superficial, and like thankfully हमारी जो ड्रेसिंग रूम है वो इस पे नहीं चलती, इस थिंकिंग पे, and like proper planning and execution हो रही है, thank God for that. But I do think कि limited overs में ऐसी चीजें, like with especially with your batting, I always say कि limited overs ODI T20 में हमें करना चाहिए experiment batting के साथ. But I slightly do think कि I mean it worked for us अभी with Shadab, Nawaz, Khushdil, but long term अगर आपके पास 10 ओवर बचे हैं and you're bringing in Shadab and then Khushdil and then Nawaz, with I know anchors जो है limited over में बहुत वो हो गए हैं, but अभी ये लाहौर है या मुल्तान है, कराची है, हो रही हैं ये बाउंड्रीज, but like
ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और, यहाँ पे वो शायद बाउंड्रीज ना हो, एंड देन लाइक यू आर बैंकिंग ऑन ऑल ऑफ दिस कि क्योंकि अभी वो बाउंड्रीज लग रही हैं, बट अगर नहीं लगेंगी तो आपके 10 ओवर फिर आई एम स्लाइटली कंसर्न कि वो कवर कैसे होंगे. बट उसके अलावा आई लव खुशदिल, बिग बिग फैन. उसने क्या अपनी गेम चेंज की है. उसके अलावा नवाज आई ऑल्सो लव, शदाब आई ऑल्सो लव, नो रिग्रेट्स, बट दैट्स ओनली माई कंसर्न. अच्छा, सो आपने इन दोनों के पॉइंट सुनिए, और जब वो मैच हो रहा था दरम्यान में तो हर आउट होता था उसके बाद लिटरली ऑलमोस्ट दोनों कहते थे कि अब आएगा हारिस, अब आएगा हारिस. एंड एवरी टाइम आई लाइक नहीं, इस बार खुशदिल आएगा, अब शादाब बाहर है, अब देना पक्की बात है नवाज आएगा. एंड एवरी टाइम दे वुड बी लाइक, वो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती थी कि लाइक आई एम द सुपीरियर क्रिकेट एक्सपर्ट ओवर देयर. यस, पहले बोलने पे एकदम सब. खुशदिल से इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, उससे मुझे थोड़ी सी है. हाँ, उस पे भी हम आते हैं क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन से भी थोड़ा सा वो बात करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन माय ओपिनियन पाकिस्तान में वैसे भी जो डेब्यूटेंट्स होते हैं दे हैव सम लाइक यू नो नर्वसनेस एसोसिएटेड. पहला मैच है बेचारे का, और पाकिस्तान में एक बहुत बुरा ट्रेंड है कि बंदा एक मैच खेलता है वो बुरा हो तो सडनली ड्रॉप. ठीक है. सो पर्सनली व्हेन हारिस वाजंट शोइंग अप आई वाज लो की ग्लैड कि वो ये कैसे ये ना कहें कि हमने उसको चांस दिया था, बिकॉज ही इज प्लेइंग एट पोजीशन बिलो रिजवान. इट्स वेरी लाइकली कि अगले मैच में भी उसकी शायद बैटिंग ना आए कंसिडरिंग बाबर की फॉर्म. और जिस तरह इस पर बैटिंग ना आने के बाद अगली बार से खिलाई ना, वो मेरे नहीं तो अगर उसको देखो, अगर उसने इसमें थोड़ा किया होता अगले में उसको मौका ना मिलता, सो सडनली दिल बी लाइक ही प्लेड द होल टूर, बैटेड एज वेल, बट यू नो आई वाज लो की ग्लैड. And the thing is, Nawaz वगैरह, they have an experience of finishing games. Be it Quetta Gladiators or Nawaz casually coming out against Bangladesh in a situation where even the commentators were also the 12th person for Bangladesh. और casually wicket से side पे होगा, कहते नहीं यार एक और ball करो, फिर वो inside out निकल के चौका मार रहा है. And as far as Shadab is concerned, I don't know, yesterday's batting was very unlike him. He was so, usually he's very calm when he's playing for Islam, but kal to itna rushed, he looked so out of shape. I think there's pressure associated with international cricket itself that gets to Shadab when he's batting. Bowling mein and fielding mein, he's like the coolest person out there. Whenever there's any trouble, he's the one there. Lekin batting mein notice karo, there was no need to play rush shots. He could simply go for doubles this वक्त, because तब इतना रन रेट भी नहीं था. That was 8.5 and he stepped out to bat. ठीक है. And you know, you knew खुशदिल दूसरी तरफ है, वो छक्का चौका मार लेता है. That's his best thing. शादाब का तुमने डबल्स की बात की, ये भी था because उस वक्त 7-8 रिक्वायर्ड था and you needed someone who could run more and run ज़्यादा. तो शादाब, हाँ, तो शादाब, you know, Shadab is very good at creating spaces, finding the angles. वो leg पे वो ball फेंक के दो. इस्लामाबाद उसने बैटिंग ही ये की, ये करके एक छक्का मारता कवर पे, वो बहुत खूबसूरत शॉट खेलता है. बट yesterday he was in a mode कि उसने दिखाने में शायद अफरीदी का कुछ जानने वाला हो. Every ball he would try to smash it as hard as he could. That's not the Shadab Khan we know in batting. Like मुझे तो वो वाला शादाब खान याद है जो टेस्ट में जाकर 3 consecutive 50s करके मिक्की आर्चर को 3 का इशारा करता था. ठीक है. So I just think that he needs time to understand the role that he has and like the maturity needed for batting international cricket. I think the stage slightly gets to him, but even if I would have been there, I would not have sent Mohammad Haris out there. Lekin in the end, we won. That's the important thing. और उसके बाद हम bowling के ऊपर फिर से जाते, क्योंकि even though people were celebrating the fact कि हम 300 रन पे रोका है, पिच ज़्यादा मुश्किल थी, मतलब ज़्यादा आसान थी, ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था. But let's be honest, शाहीन के एक विकेट के बाद इट लुक्ड एज इफ हम कुछ भी नहीं कर पा रहे. ठीक है. हसन अली भी आ गया, रऊफ भी आ गया, शादाब डिड सेव रन्स, नवाज ने भी. बट माय कंसर्न इज आल्सो सेम कि जब रन्स रोक रहे हैं दोनों स्पिनर्स, तो व्हाई वाजंट खुशदिल ट्राइड. उसकी लेफ्ट आर्म स्पिन काफी सक्सेसफुल रही है, ऑस्ट्रेलियन टूर में भी उसने बॉलिंग कराई है. ठीक है. और उसके अलावा एक और चीज ये थी कि हसन अली पे जहां तक बात है, he was slightly unlucky as well. There were 1 or 2 deliveries where he bowled literally the best balls of the match. वो एक इन स्विंगिंग यॉर्कर था
जो बैट के अंदर से बचा और विकेट से इतना था, एंड इन प्योर फ्रस्ट्रेशन ही जस्ट सैट ऑन द पिच कि मैं क्या करूं, ठीक है. सो एंड आई एम स्लाइटली कंसर्न कि पता नहीं क्या पिच बनाते हैं, ना स्विंग होती है ना स्पिन होती है, द बैटिंग पैराडाइसेस, यू लिटरली किलिंग ऑफ द कंपटीशन. तुमने शादाब के शुरू वाले ओवर देखे होंगे, काफी अनइवन बाउंस आ रहा था ब्रो. शादाब शादाब छोड़ो, सेकंड इनिंग्स के एंड तक वो शे होप को भी जो बाउंसर पड़ा था हारिस राउफ का, हारिस राउफ ने उसको सॉरी तक नहीं बोला. इट वाज लाइक एज इफ ही सेड लाइक यू डिजर्व्ड इट. तो बॉल बहुत बैट, जब बाबर भी बैट करा, स्वान भी बैट करा, स्पिनर जब वो करा था वॉल्श, तो वो हाफ ट्रैकर मारता वो बाबर के पांव के पास कुछ. मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई पीसीबी पिच क्या बनाता है. ये मुल्तान की पिच हर मैच के लिए इस्तेमाल होनी है. So if that's the criteria for having, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी जब आएंगे तो याद है ना उस मुल्तान में होना है इनका, ठीक है. So I was like यार ऑस्ट्रेलिया वाला टूर was an example where everyone criticized you कि क्या pitches बनाई हैं, and we're back with the same thing. So that was slightly disappointing. But Zoha, you want to talk on Khushdil Shah's bowling? Yeah, I mean just the fact कि आप अगर especially because if you're playing part timers like Khushdil Shah, उनका यही रोल है ना कि अगर आपके मेन स्पिनर्स इस वक्त शादाब और नवाज हैं, ठीक है, अगर नवाज फॉर एग्जांपल इज गोइंग फॉर रन्स, देन खुशदिल शाह का लिटरली ऑन पेपर भी यही रोल है कि वो आके रिलीव कर दे. सो बेचारा नवाज, like there were I think 2 or 3 overs in the middle where he was going for like a lot of runs. Nicholas Pooran came and वो 3 छक्के मार गया उसको. उस वक्त आप like put Nawaz off and like put in Khushdil, क्या पता विकेट like उस वक्त ही वो शॉट कोई लगेगी विकेट निकलेगी. That's how Rizwan used Khushdil throughout the PSL. Rizwan used him as a striking option. वो इतनी रख के यॉर्कर भी मारता था and his arm ball was very deadly. I still remember. And you're totally right. ऊपर से चलो it's fine अगर खुशदिल शाह को नहीं यूज करना, बाबर खुद आ जाए. like just एक ओवर है करा दे, एक ओवर है करा, कुछ तो करो. Why do you have to like stick to the exact options? अगर बैटिंग में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बॉलिंग में भी कर लो, कुछ तो करो. the way बाबर हमारा सब कुछ कर देते ना, we're like जो भी बाबर को दे दो ना वो काम ठीक कर देगा. हाँ, तो मैं तो रेडी थी कि रिजवान ग्लव्स उतारे, एक उसने काउंटी में ओवर कराया था, एक इधर भी आके कराया, कुछ दिखाया. हारिस था हमारे पास दूसरा विकेट कीपर. मैं तो कहता हूँ शान मसूद की वापस बुला लेते हैं ऑलराउंडर, मीडियम पेस वो स्विंगिंग कराए. शान मसूद एजेंडा कंटिन्यूस. ये हर क्रिकेट फ्रेंड्स के एपिसोड में एक दफा शान मसूद के बारे में बात होगी. The team. But like honestly, Faiz, if we are on this topic, in the one day setup, where would you have Shan Masood? Apart from the bench तो बनता है. Honestly, if I'm being very honest, bench. I don't no. What I see is Shan Masood has developed his batting quite a lot. He's no longer just an opener जो सिर्फ fast pitch खेलते हैं, सिर्फ power खेलते हैं. ठीक है. So what I would do is, I know it's gonna sound a bit absurd, but if you're gonna end up playing Khushdil, Shadab, Nawaz, सारे खिला रहे होगे, तो why not try Shan at 4, switch Rizwan to 5 or something? I mean, put the debutant out. What are you suggesting? Imam को निकालें या फकर को निकालें, बाबर को निकालें? नहीं निकाल सकते ना. नहीं निकाल. I am down for Shan Masood at 4. The thing is, उसको spin भी इतनी अच्छी खेलनी आती है, and he has his escape shots as well. His inside out over covers, his slog sweep. He can bat in the middle as well. There's no doubt about that. Anywhere. I think we finish भी कर सकता है at this point. नहीं, let's not make him Babar Azam, okay? थोड़ा फर्क है. Babar Azam finish नहीं कर सकता. Let's keep it there right now. Yes. Okay, I'm just gonna like pretend I did not hear that. Okay. ये अभी तो मैं ये भी गलत साबित कर रहे हैं. वो बेचारा 103 करके गया, अभी भी लोग get like. That's not the point. No, that's his role in the team. He's done that pretty well. He's been doing that brilliantly over the past. The fact is that he struggles with finishing. That's it. Like that does not make him. I think by the time finishing the वक्त आता ना, he gets tired as well. Like if you could see कल का match as well, he was clearly fatigued when he reached 100. And
if we are doing like honest analysis and criticism on a player, it doesn't make him any less of a player. It just means that this is something he can work on to become greater than the great player he already is. That's it. Yeah, तो वो ये अफगानिस्तान वाला मैच मुझे याद आता है. इंतहाई डिफेंसिव हो जाते हैं ना, जब आप कह देते हो कि he needs to work on his finishing, वो मुझे बड़ा बुरा लगता है. Like we're just talking about one shortcoming that he has that he can overcome. That's it. जिस शॉट में बाबर आउट हुआ है उस पे like you could clearly tell कि बाबर खुद was like ये मैंने क्या किया है. Yeah. Like, You could see the frustration when he was going and he's like shit I messed up. He can do. He has the ability to finish games off. एक दो games like something happens, he doesn't do it, he should be able to do it. Kohli in his peak used to finish games off. Babar can't do it. He finished off 152 for 0 by the हाँ नहीं तो वही कह रहा हूँ ना, that game और जो एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी that game, ये दो तो मुझे याद है. I'm glad कि उसको realization हो जाती है ना कि like कुछ होते हैं वो कहते हैं कि मेरा रोल नहीं है, उसको ये पता है कि उसका रोल है, उसको like करना चाहिए. Like the moment the ball left his bat, उसको पता था गलत है. He just looked like I like that he's doing recently is जब finishing का वक्त आता है, he tries to either hit or get out, which is good. He doesn't linger on. That's the worst thing. You're making it difficult for your own team as well. उसकी गेम में पहले नहीं था. पहले ही वो नहीं करता था. पहले he was not even trying to finish things off. I think it's because he trusts his team now. That's a very different thing. I personally think that he has the ability to finish games off, and if he's in that position, he should be able to do it. That's it. Also, so we are short of time, and I had two very interesting questions before we like end. So World Cup आ रहा है इस साल, ठीक है? You're the chief selector, ठीक है? नहीं, एक को बाबर बना देते हैं, एक को chief selector बना. Zoha, you're Babar, Mustafeez, your chief selector. You have two options in front of you. Do you play Nawaz over Imad, considering Imad's bowling is way better, but Nawaz is very good at batting? Okay. The other question is, the other two, do you still go with Hassan Ali, considering that Australia mein he's not going to be that successful, और वहाँ पर नसीम शाह की पेस आदि काम आएगी? Third question, do you still stick with Shoaib Malik, who hasn't been the best in Australia, or do you bring in someone else? I think we are. The thing is, Shoaib Malik का experience है, वो लोगों को ठंडा करता है. He is a proven finisher as well. He knows कि उसने क्या करना है, and he's good at that. ठीक है, whereas a youngster would be slightly immature and get out with like a बकवास shot. और उसके अलावा वो nerves भी होते हैं. World Cup हमारा पहला, so first Zoha and then Mustafeez. और थोड़ा जल्दी क्योंकि 7 मिनट है. For Imad and Nawaz, I take Nawaz. Nawaz की bowling इतनी बुरी नहीं है. I mean, he goes for boundaries, but उसके अलावा वो dot balls भी करा देता है. Like it's लेकिन ऑस्ट्रेलिया में spin नहीं होगा. That's another thing. Spin होगा नहीं तो वो उसको variety पे जाना पड़ेगा. Because he's literally going to be a spinner who hardly spins. Yeah, but and Imad is great at being a spinner who doesn't spin. Yeah, and people still can't play him. So you go with Nawaz. But I go with Nawaz because वही बात है कि Imad then you're taking a step back. अगर आपने इतनी देर नवाज को डालना शुरू कर दिया ना, then just stick with them. ठीक है? दूसरा, I take Shoaib Malik as a mentor. That is my solution to this. I take him as a mentor. जिसका धोनी गया है उस रोल में, because then he's in the dressing room. इसीलिए वो बेचारे जो है कभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं, because they saw Mahendra Singh Dhoni in the dressing room. But I get your point, and that's very valid. If you cannot play, I think जो Shoaib Malik का experience है ना, वो dressing room में बहुत help करता है. I mean, also he's evolved as a great मतलब personality for cricket. वो जो पाकिस्तान का पहले politics वाला dressing room था ना, Shoaib Malik has seen that and he's come out of it, और उसने ये बाबर वाला wholesome पूरी vibe को बहुत अच्छे से, he's become an ambassador for it. Even Fakhar Zaman said, I credit Shoaib Malik for my hitting ability, and even in the semi-final against Australia, he was playing with Shoaib Malik's bat. And मैं इतना die-hard fan हूँ, मैं literally training sessions देखता था before Pakistan actually left, और हर दफा नज़ारा शोएब मलिक फखर को बताता था कि नीचे से उठा, ऊपर से ना गए, और literally वो नीचे से स्टार्क को मार रहा था छक्के, and he literally said that. और शाहीन वाली बाबी के शाहीन was like मैं के राहुल को यॉर्कर मारने लगा, but मलिक was like नहीं, लेंथ पे करो, मिलेगी स्विंग.
So you can see that actually happening, and that's so important. वो हसन अली जब कैच ड्रॉप हुआ है The only person who went there was Shoaib Malik. ठीक है. हाँ, तो we need him in the dressing room, no debate about that. You did not answer about Hasan Ali. हाँ, हसन अली I don't think अभी पता है हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हसन अली as our red ball player. उसको white ball के pressure मत दो. Wasim or Naseem? I take Naseem, and if like second अगर option डालिए I'll take Dhani, not Wasim. I don't hate him or anything, like, but I like Dhani. Dhani even in PSL he. But वो मतलब वो कर लेगा या उसके अंदर है, like he has that factor जो आपको एक पेसर से चाहिए ना, एक factor उसको मिलेगा. चलो ठीक है, मुस्तफीज तुम बताओ. अच्छा, quickly, Imad or Nawaz is a very good question. I believe Imad ने जो role play किया है opening 2 overs कराने का, नवाज के लिए वो आसान नहीं होगा, जैसे तुमने point out किया ऑस्ट्रेलिया में. तो I would like दोनों squad में तो होने चाहिए, there's no doubt about that. But like depending on the opposition we are playing, depending on the openers we are playing against, that is going to be a very important question. If you remember, even against India, the ones that are actually best at spin, because subcontinent वालों को ये कहते हैं spin के खिलाफ best. Imar did not give any runs at all, and that played a very pivotal part. क्योंकि फिर उन पे pressure आया था कि शाहीन पे भी attack करना है, because at both ends they could not score. Exactly. So I think that Imad's contribution is very valuable, but also Nawaz as a finisher, I believe, is better than Imad. Imad hasn't done very well with the bat recently. शायद एक आध innings मुझे याद है, उसके अलावा नहीं. So tough question, but again, I do this game to game wise. I think we need to put in a rotation policy, unlike the previous World Cup, जिसमें हमारा था कि stringent team खिलानी ही खिलानी है. Number 1. Number 2, दूसरा सवाल क्या था, जल्दी बताओ. मलिक को रखोगे? Mariko in the squad, definitely in the starting lineup, I don't think so. Based on the fact that you're trying to move forward and you have the players right now in the team who can play that role. Again, considering कि अगले कुछ महीनों में हमारे T20 series में performances कैसी होती हैं, we would have the right pick for that position. अगर नहीं होता तो I don't mind Malik in the playing 11, but I think I'd prefer someone else. ठीक है. उसके अलावा Hasan Ali, as I think it's pretty clear we've given him a lot of chances. Beach mein I like this fact about Babar that he gives players chances, and this is something that we have to appreciate about him. Khushdil ko usne bahut chances diye. He knew he saw something in him, and it ended doing well. ठीक है. So I feel like Hasan ko chances bahut zyada mil gaye. I feel like he needs some rest, at least on the bench वगैरह. Naseem versus Wasim. Naseem hasn't done that well in the Vitality Blast, by the way. I'm not entirely sure about him as a T20 bowler right now. कुछ और games उसकी देख लें, एक आध और league वगैरह देख लें. I'd prefer Wasim right now, but I'm open to having Naseem on the side. Okay, Faaiz बोलें आप. So coming back to me myself. अच्छा, so सबसे पहले नवाज और वो वाला सवाल इमाद वाला. So if I'm taking Naseem Shah to the World Cup, I would keep Nawaz instead. क्योंकि Naseem नई balls अच्छी करता है. But at the current moment, I would say Wasim over Naseem, considering the fact that Wasim ने पाकिस्तान के लिए perform भी किया T20 में, and he's very handy with the batsmen. He hasn't performed at the international stage yet, but I do see potential in him. So since I'm going with Wasim, I'll keep Imad in the starting lineup, but Nawaz squad में होगा ही होगा, because that's like he's too important. उसकी fielding कितनी अच्छी है खाली. So he will be in the squad, and you're right, depends on the situation as well, but you would want Imad Wasim there. ताकि ओपनिंग बॉलिंग शाहीन और इमाद करें, ठीक है, और वसीम, रऊफ और वो शादाब जो है वो बाद में आकर अटैक करें. फर्स्ट थिंग दैट. मलिक की बात ऑनेस्टली मुझे अभी तक ना अपने पास जब T20 की मैच देखता ना, दे लिटरली प्लेड विद आसिफ अली, खुशदिल एंड इफ्तिखार, ऑल 3, और मैं वो विटनेस करके आया था वो मास्टर क्लास पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एंड दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग. किसी को रोकना ही नहीं आ रहा था बॉल, सारे छक्के मारते हुए आउट हो रहे थे. ठीक है. सो कंसिडरिंग के वी ओवर रिलाई ऑन बाबर एंड रिजवान इन T20, जिस दिन वो आउट हो जाते हैं फिर लाइन लग जाती है. वर्ल्ड कप में भी ये नजर आया था न्यूजीलैंड वाले मैच में, जब फखर भी आउट हो रहा था, सारे आउट हो रहे थे, हफीज आउट हो गया था.
ठीक है, so I would still keep Malik because we still need one anchor person over there in case everything fails. ठीक है, but then again अगर कोई दरमियान में अच्छा आ गया तो वो अलग चीज़ है. So that is my 3 options. And on that note, I would like to say that it was a pleasure hosting this episode as well. And Zoha and Mustafeez, thank you for showing up. I hope हमारे अगली episode में और लोग आएंगे. And with that being said, I wish Pakistan a very best of luck for tomorrow's match as well as the series. And by the way, South Africa had the record run chase, and India को कुछ सोचना चाहिए. Allah Hafiz.